अगर तुसी विजिटर वीजा ते आए हो, स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट करना चाहते हो, तुसी सानू जरूर डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करो. इट मीन्स वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू. सो मैम ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ मूव ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਅਰ 12 ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ Okay. In that case, my take would be on this कि तुसी अपनी स्टडी कंटिन्यू करो. मान लो कि तुसी ऑलरेडी 12th करके तुहानू पता हाले यूनिवर्सिटीज दे विच एडमिशन नहीं मिल रही है, तुहाडी ऑफर लैटर नू बहुत टाइम लग रहा है, सीओई नू बहुत टाइम लग रहा है, स्पेशली पंजाब तो जेडे स्टूडेंट्स ने. तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज अपनी कोई ना कोई स्टडी जरूर कंटिन्यू करो और गवर्नमेंट अप्रूव यानी कि you know what people are doing कि कंप्यूटर सेंटर तो सर्टिफिकेट बना लिया, वो काम ना करो, प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव तो करो. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਦ੍ਰੁਪਤਾ, I hope I'm pronouncing the name right. So ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ what about diploma in nursing? Is there any chances government might get it out of the skilled list in future? It doesn't look like enrolled nurses, whether it's enrolled nurses. So diploma of nursing means enrolled nursing. So in that case, you know, if you recently see there is a media, in that media, minister mentioned that all they need are nurses, social worker and teachers. Even they are doing paid placements for these three professions. So nursing won't be there out of any list, guys. Remember, nursing won't be there. So don't worry about nursing. Yes. And ma'am, एक मैंने और क्वेश्चन दिख रहा है कि as you told in video कि 14 मई ਨੂੰ बजट रिलीज होना है. ਹਾਂਜੀ. उस टाइम ते TR एक्सटेंशन तक क्लोज कर देंगे. Still the last date to lodge visa would be 30th of June. Okay, नहीं उस दिन TR एक्सटेंशन ਮੈਨੂੰ समझ लग गई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ क्वेश्चन है. कोई TR एक्सटेंशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ क्लोज हो रही है 30th of June. 30th of June is the last date when they are going to close the TR. In that case, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14th of May ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो भी है, अगे जाके कोटा पता चल जाएगा बजट दे विच. बट ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ TR ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨੀਰਵ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ MIT. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MIT ਕੀਤੀ ਆ. ਨੀਰਵ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਫਰਮ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਨੂੰ. ਮੈਮ ਇਨ ਹਿਸ ਕੇਸ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਡੂ? ਓਕੇ, so अगर तुसी already MIT कर चुके हो, IT ना related there are some specialities as well you should consider. Let's say digital marketing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, AI artificial intelligence, so that could be the speciality. In that you need not to study another masters. Artificial intelligence ਦੇ ਵਿੱਚ there are few courses that you can offer. You can always book a consultation with us. We will suggest you what after MIT you can do basically. So Neerab, I hope you have got your answer. Also, ma'am, Binod is asking chances of getting invitation for 189 in New South Wales for registered nurse, EOI with 70 points. Okay, so 189, you know, the last invitation round for nurses for 189 was on 18th of December 2023. So it's been around 5 months already that there's no round for 189. We are hoping to have very soon one next round for 189. And in that definitely nurses will be invited. Very sure nurses will be invited. Definitely. ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ. ਐਮੀ ਜੀ, ਆਡੀਅנס ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ. So one more thing we are getting. So ma'am, किसी ने advanced diploma of hospitality management पढ़ी है ते right now वो 485 visa ते ने. And she's having like 7 months and visa have 7 months. What should I do next? Okay, advanced diploma already ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 485 ਤੇ ਹੋ, EOIs hopefully ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, job ready program. ਅੱਛਾ, advanced diploma ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, 485 ਦੇ ਉੱਤੇ job ready program ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? No name, would you please can you please tell ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ job ready program ਕੀਤਾ so that ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ clarity ਦੇ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ regarding?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਮ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ should we answer this one in the meanwhile ਕਿ somebody is asking, his name is Rincy, he's asking us कि what are our views on masters of community development? Community development, masters of community development. So in that case, see, for community development as such, like community services officers are there, so for that you need not to do master, but if you have done a masters of community development, you need to have 1 year of relevant experience in order to get the skills assessment, and then there is a permanent residency pathway, but no 189 pathway in that case. 190 and 491 pathways are there. Definitely. So I hope most of you are getting your rewards, and along with that, ma'am, the one with no name, they are saying that they have done their GRP already. Okay, already GRP done. In that case, if you have lodged your EOIs for 189, 190, 491, waiting for that. If you are in Queensland, you know that today Queensland has been closed for this financial year for 190, 491. And if we talk about 189, not predictable for chef whether there will be invitation round in next few weeks. So in that case, I would say, if you have to go back to, if you have already done GRP, you can consider 407 training visa. You can also consider, if you have 2 years of experience, employer is ready to sponsor, you can consider 482. But remember, for chef, your 482 employer, that cannot be limited serving restaurant. So that's very important. Whenever you are choosing an employer for 482 for chef, it should not be limited serving restaurant. अगर ये सब तरह ठीक है तो you can go for employer sponsored visa. अगर पर ਤੁਹਾਡੇ को 1 year ਦਾ experience ਹੈ, training visa would be a good option. All right, so ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ next question ਤੇ move ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ. Okay, ਮਲਿਕਾ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ encourage us guys, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, encourage ਕਰੋ more viewers ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ question ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ. So let's move on to the next one. ਮੈਮ ਤੁਸ਼ਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 75 points ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. Will he get his invite? No, actually his 75 points on motor mechanic. तो 491 क्वींसलैंड. तुषार 491 क्वींसलैंड ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. 491 ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ 189 ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ 60 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, 189 ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. तो क्वींसलैंड इस टाइम ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ क्वींसलैंड ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ क्वींसलैंड ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. तो ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्वींसलैंड ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਵੇ. ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ 189 ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ employer sponsored ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. All right, with this one we have another one for you, ma'am. So it says कि chefs वास्ते पूछ रहे ने कि तस्मानिया ਦੇ ਵਿੱਚ chefs ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? Maybe they asking about ਦੇਖੋ ਟੈਸਮਾਨੀਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀਏ. ਅਗਰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕਰੰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. तो मैं कहूंगी कि इस तो ज्यादा होप ना रखो, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लुक्स लाइक इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਪਸ ਨੇ. ਬਾਕੀ 14 ਮਈ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 14 ਮਈ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ. ਸੋ 14 ਮਈ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਨ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਓਕੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੋ. ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ. ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 7788 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ. ਐਂਡ ਵਨ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਨ, 65 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ 189 ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸਸ ਨੇ. ਪਿਛਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ECT अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ 65 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ 189 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ. ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 190 491 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ECT. ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਮੈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 482 ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ?
ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਰਿਪਲਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 75 points for carpenter Victoria 491 ਔਰ 65 for 190। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਾਫੀ ਟਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਇਵਨ ਚਾਹੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਰਿਹਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ, ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਾਨੂੰ one of the questions says that ਉਹਨਾਂ ਦਾ 485 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and she wants to apply for a student visa। do I need to apply now or wait until December? Okay, देखो इस टाइम ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ 485 ਹੋਲਡਰ ਹੋ, 408 ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ within few months, let's say 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ, ਉਹ ਸੀਓਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਐਨਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ इवन दिसंबर वीजा एक्सपायर हो रहा, अपनी ऑफर लेटर लिए अप्लाई कर दो, सीओई लिए अप्लाई कर दो, डोंट वेट अंटिल दिसंबर। एटलीस्ट ऑफर लेटर अप्लाई करके रखो, तानू पता होवे कि कंफर्म्ड है मेरी एनरोलमेंट। Definitely. And ma'am there is like one more question, so basically ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ਟੈਸਮਾਨੀਆ ਤੇ ਏਸੀਟੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਬਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਟੈਸਮਾਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Sure. So I hope you guys are getting your answers. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਨੀਚੇ and we will 100% try to answer most of your queries in this live. So following that, ma'am, there is one more question. So a big fan says that ma'am EN का क्या chance है 190 New South Wales 65 points? Okay, New South Wales 65 points. New South Wales is yet left with so many seats. They are just not sending out the invitation. Very random invitations are there from New South Wales. It may or may not happen in this financial year. Nobody can assure you at this point for EN in New South Wales. But considering what they are looking for and the demand is there for an EN will definitely get an invitation. Only thing, weight is something that is right now, I know everybody is stressed about the weight, but weight is there. Yes. So लेकिन इसी टाइम पे हम आरबी जी को और वेट ना करवाते हुए उनका क्वेश्चन पूछते हैं मैम से। तो वो पूछ रहे हैं कि एक्चुअली उनको डायबिटीज है शायद, तो वो पीआर पे इफेक्ट करता है? Yep. So देखिए, whenever it comes to health is something that we need to pass health test, health examination, right? And when it comes to diabetes, अगर आपको मैं if I just explain you in a layman language, basically what Australia is considering, Australia is always considering the cost, how much it's going to cost your medical expenses, right? So there is always a medical officer of Commonwealth. They are going to determine how much it's going to cost. So diabetes, we had many clients with diabetes 2, DM2, diabetes mellitus type 2. In that case, they got their permanent residency, they passed their health examination. It all depends the severity of diabetes mellitus and how it has affected the parts of your body, right? So if it's not there, in that easily pass the health test. Definitely, and I hope कि आरबीजी को जल्दी से उनकी पीआर मिल जाए, everything goes good. So ma'am, along with that, there is ढिल्लो जट्टी, वो हमसे पूछ रहे हैं कि I'm working in regional New South Wales, 75
points for 491. Is there any chance for invitation? Okay, and please बता दीजिए. ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦਸੀਏ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਗੈਟ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ. ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ, those who have no condition on their visa, they can easily get their student visa if they are following certain criteria. You really need to follow the criteria. Criteria means like your relevant study, progression of study, English requirements you are meeting, financials. I think in that case you can get tourist to student. It is possible. Yes, it is possible. And along with the director पूछ रहे हैं कि 7 months से ब्रिजिंग पर हूँ, कब आएगा स्टूडेंट वीजा? क्यों लग रहा है इतना टाइम? Okay, student visas are taking time. Onshore student visas, earlier they used to be very quick, like we got many auto granted, but right now the processing time is very long. I think they are doing something in the background. Hopefully we'll soon start getting these grants, onshore student visas. Sure Victor, हम यही होप करते हैं you get it granted very soon. So हमारी इंतजार की घड़ियां, हमारी नहीं एक्चुअली विक्टर के इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म हो. मैम वो और हमें पूछ रहे हैं, दर्श गिल पूछ रहे हैं कि 189 का राउंड कब होगा? Okay, 189 का राउंड as we already mentioned, 189 already लास्ट जो राउंड था वो 18th of December 2023 को था, but nurses, teachers, social worker, they got invitation. Now next round very soon it should be. Hopefully we'll get that very soon. Okay, so I'm working as a so ma'am that Dillo Jatti, so she was asking that she's having those points. She's actually working as a chef. Okay, she just now mentioned. As I said, New South Wales very random in giving out invitation at this moment. They have quota, but they are not sending out invitation. So no one can assure you about New South Wales. If you are considering pathway 1, the chances are better if you have already submitted pathway 1. But for other the random rounds, we cannot say anything at this stage. Yeah, and then ma'am, immigration जो है वो TR कितनी देर में ग्रांट कर रही है? ये क्वेश्चन आ रहा है. How much for TR? Okay, yeah. TR again, it has gone longer than usual. Earlier, TR used to be within 1 to 2 months. Right now, 485 visa, it's taking about 4 to 5 months. So 4 to 5 months चाहिए अभी. और मैम मिस्टर सिंह इसी के साथ में पूछ रहे हैं कि नो फर्दर स्टे आ रही है टूरिस्ट वीजा पे और स्टडी नाउअडेज सब किसी पे आ रही है या सब पे आ रही है नो फर्दर स्टे? इस पे अभी हमारे 2 विजिटर वीजा ग्रांट हुए हैं एंड दोनों जनरल स्ट्रीम में थे, जनरल टूरिस्ट स्ट्रीम में थे, and they both got no further stay, and we don't know what department is doing. You know, like minister already in her press conference, she said once like a visitor visa has been abused very much, so they are going to conduct that no further stay. They are going to impose all the no further stay, and yes, they did it. Today's visitor visa we got granted, both young applicant from India, but they both got no further stay. Yes, so I hope आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा. साथ में ढिल्लोप्रीत जी पूछ रहे हैं कि मैम अकाउंटेंट्स का प्लीज रिप्लाई एनी चांसेस फॉर अकाउंटेंट्स इन क्वींसलैंड वर्किंग फुल टाइम? Queensland is closed today, 10th of May. Queensland is closed. They are going to open now next financial year. When exactly we can't say. Maybe in August or September they'll be opening for the next financial year. And in that, again, you have to relodge your EOI. We can then comment looking at the quota for the next financial year. Wait for next financial year, guys, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आ रहे हैं हमें. और मैम नीलम प्रीत जी पूछ रहे हैं कि आरएन है वो न्यू साउथ वेल्स में वर्किंग फ्रॉम लास्ट 1 year and 5 months. उन्होंने 189 लॉन्च किया है विद 65 पॉइंट्स और 190 विद 70 पॉइंट्स. कुछ चांसेस है मैम उनके? हाँ जी बिल्कुल. आरएन लास्ट राउंड जैसे मैंने बताया दिसंबर 2023 में हुआ है, उसके बाद आरएन का 189 का राउंड नहीं हुआ. इट कैन हैपन एनी टाइम क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने होने वाले हैं, तो इट कैन हैपन एनी टाइम. सो बी पेशेंट, यू विल गेट वेरी सून द इन्विटेशन.
एंड अलॉन्ग विद दैट मैम सेखों पूछते हैं कि वो 408 पे हैं एक्चुअली, और उनकी शादी होगी जनवरी में, बधाई हो आपको। और वो पूछ रहे हैं कि मैं स्पाउस को डिपेंडेंट बुला लूं अपने पास। ओके, 408 आपका कब तक है, पहले ये बताइए। ये ना हो कि 408 आपका 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है। इन दैट केस 408 सब्सिक्वेंट एंट्रेंट का इतना खर्चा भी करोगे तो उसका प्रोसेसिंग टाइम काफी चल रहा है, 4 to 5 months है प्रोसेसिंग टाइम। तो अपना वीजा की हमें बता दो एंड डेट क्या है, हम बता देते हैं कि बीवी अभी आएगी या थोड़ी देर में आएगी। और आई अप्लाइड फॉर माई मॉम एंड ब्रदर वीजा, माई मॉम गॉट वीजा बट ब्रदर रिफ्यूजल। So it's very common, guys, nowadays. If young applicant from India or any of these countries like Pakistan, Bangladesh, young applicant Nepal, if you are applying young applicants, definitely refusals rates are pretty high. So you have to prove strong incentives to go back to home country in terms of financials, in terms of employment incentives, in terms of family. So if you have those, definitely, then in that case, we can consider reapplying. ओके, सो अलॉन्ग विद दैट मैम 173 सब क्लास है कोई, उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि वेटिंग टाइम कितना होता है। वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है इन वीजास का, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लंबा है। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सबकी सब क्लासेस हैं, इट्स ऑलवेज अपॉन द क्यू जो है बहुत लंबी है, 12 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक का टाइम पीरियड चल रहा है। 12 years या 12 मतलब डिपेंडिंग अपॉन अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, तो जो कॉन्ट्रीब्यूटरी वीजा है आपके, उनमें जो है वेटिंग टाइम जो कि 3 to 4 years हुआ करता था, राइट नाउ इट्स 12 years। एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी जो पेरेंट्स वीजा है, उनमें वेटिंग टाइम इस टाइम पे चल रहा है अबाउट 30 years। सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। इट्स लाइक टू मच फॉर देम, सब्र ज्यादा ही हो जाएगा, फल ज्यादा पकना चाहिए। एंड मूविंग ऑन, आगे चलते हैं थोड़ी और कमेंट्स की तरफ। सो हियर आई हैव क्वेश्चन, व्हाट अबाउट ब्रिकलेयर्स मैम? ब्रिकलेयर्स अगेन for any trade, like you tell me now whether you have applied 189, 190, 491, which state, accordingly we can tell you what are the chances. So along with that मैम, सेखो जी जिनकी शादी हुई थी वो बता रहे हैं कि 408 का जो लेंथ है ना उनका, वो 23rd May 2025 तक है। Okay, in that case you should apply right away 408 subsequent entrant, within 4 to 5 months your wife will be here. All the best. मैम स्किल्स असेसमेंट अप्लाई करना है फ्रॉम आईटी बट डोंट हैव अ जॉब इन आईटी फील्ड, 85 पॉइंट्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। स्किल्स असेसमेंट आईटी में either you can get it through job or you can get it through PY, professional year, if it's bachelor's or master's of IT. So complete your 1 year of PY and then you will be able to get skills assessment or 1 year of job experience. For sure. And ma'am, any chances for RN in Victoria for 190, 65 points? Okay, for Victoria used to be very, very considerate for health sector and especially RNs. I don't know what happened to Victoria for the last 6 to 7 months. They are very, very reluctant giving out invitations to RN at this moment. But as I said, next financial year is going to be very positive. It looks very positive and we are hopeful about the next one. So we really hope most of the clients they get their PR granted. And इसके साथ में हम सुखदीप पूछ रहे हैं कि my cousin has done engineering in electronics and communication working from 2 years. Any chance of PR? Okay, any chance of PR? In that case, if they don't have positive skills assessment, just working as an electronic engineer, employer is ready to sponsor, go for employer sponsored visa. But if they have lodged EOIs, see, any skill visa, it depends upon the invitation rounds. And for that, no one can be very sure of it. It depends upon how the quota and how that financial year everybody is going with. But if your visas are running out and you have 2 years of experience, go for 482 visa. Perfect. एंड मैम पूछ रहे हैं मिस्टर सिंह एक और क्वेश्चन। सो मिस्टर सिंह पूछ रहे हैं कि पीआर वो खुद हैं और अपने भाई को बुलाना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा पे, वो 34 इयर्स के हैं। 100 में से कितने चांसेस हैं? 100 में से चांसेस, इट डिपेंड्स कि आपके भाई के इंसेंटिव्स क्या है। अगर तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है वापस जाने के, ना तो एम्प्लॉयमेंट स्टेबल है, ना ही उसके फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो फिर तो 100 में से 0 चांसेस हैं। अगर आप दिखाओगे
फाइनेंसेस बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट के गुड चांसेस हैं, फैमिली है उसकी भाई की पीछे 34 इयर्स अबव है, तो यंग कैंडिडेट उसको माना जाता है. इफ यू शो ऑल दीज एविडेंस, इन दैट केस द चांसेस आर वेरी गुड. फिर 100 के और पास में आ जाओगे. तो मैम अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. गीत पूछ रहे हैं कि आई एम वर्किंग एज अ शेफ फ्रॉम 2021 एंड दिस दिसंबर आई विल कंप्लीट 3 years, so can I apply 186? Okay, so working as chef from 2021, yes, you can apply 186 if you have a positive skills assessment, 6 each, and an employer ready to sponsor you. But remember, 186 visa, 482 visa means we have to determine the eligibility of an employer as well. So you can't just say, okay, a small shop, not having good turnover, not many people working there, and they will be able to sponsor you for 186. So firstly, determine the eligibility of your employer and then we can go ahead. तो इसका मतलब काम करने वालों के साथ साथ काम करवाने वालों के भी कंधे मजबूत होने चाहिए. बिल्कुल. तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 70 points automotive in South Australia for 491. Any chances? Right now, South Australia, what they are doing, they are giving out invitation to those who have their visas getting expired. If not that the case, in that case for South Australia, we have to wait for the next financial year. And South Australia was very considerate for all previous financial year. This financial year is going bad again for every state, including SA. या सो मैम अभी हम थोड़ा सा टिकटॉक से जो नजरें हैं फेसबुक पे लेके जाते हैं. फेसबुक पे क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रेजुएट एंट्री क्वींसलैंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाउ मच पॉइंट्स शुड आई सिक्योर फॉर 491 इनविटेशन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? Okay, graduate entry for Queensland next financial year, again their criteria is going to be changed. So if you consider this financial year, your GPA must be 5.5 for 491 for a bachelor, and last time, like not current one, current is today closed, but the last financial year, if we talk about Queensland, it was 6, so the GPA requirement was 6. Don't know with the next financial year what they are going to bring in, but I would say 5.5 to 6, like try to aim for 6 GPA for graduate. Yep. So ma'am, there's like one more question here. वो पूछ रहे हैं कि I got offer letter already from college. Okay, which college? कौन से college से मिली आपको offer letter? Okay, जब तक ये बताते हैं, मैम पूछ रहे हैं 85 points के ऊपर 189 आएगा यूनिवर्सिटी लेक्चरर का. University lecturer 189, 85 points पे, yes, very good chances whenever the round is going to happen. Definitely. So waiting for the round, waiting for the PR. And मैम साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं हमें. हाँ जी. South Australia, as you guys know, like right now, South Australia is only ROIs, new ROIs, no one can submit. The one we have already submitted, for that, they are only sending out the invitation if your visas are getting expired and you are meeting the criteria. But we are very hopeful, as I said many times, for the next financial year, the hopes are pretty high. And ma'am, a nursing student is graduating next month. वो पूछ रहे हैं कि best time to do skills assessment क्या होगा? उनको job offer एक hospital में already मिल गई है और उनके according उनके पास 65 points हैं. वो Brisbane में है. Okay, so in that case, the moment nursing student gets graduated, the first thing is before graduation, 8 weeks before graduation, always apply for your RN license with 7 each, right? The moment you get graduated, you get your RN license. With that RN license, we can apply for skills assessment. And once you have a positive skills assessment, one can launch EOI. Definitely. So, followed by that, ma'am, Gunjeet पूछ रहे हैं, can you change employers on 408 visa? Sorry, 408 visa पे मैम पूछ रहे हैं employer change कर लो. Okay, 408, yes, 408 there was leniency on 408 visa. You guys can change employer. You must be employed, and you must be employed with any Australian employer, and you need not to even inform immigration because there was a leniency and we have that legislative instrument. And ma'am, 485 subsequent entrant का processing time कितना लगेगा? Okay, 485 subsequent entrant is taking somewhere 3 to 6 months at this moment. So 3 to 6 months का wait करना पड़ेगा. And along with that, ma'am, next
नेक्स्ट सब मैम पूछ रहे हैं कि क्वींसलैंड का राउंड कब होगा, क्वींसलैंड का राउंड कब होगा? Okay, Queensland is closed, guys. We are very sorry to inform, but Queensland is closed for now for this financial year. It's gonna open next financial year. What date we can't say, because looking at Queensland's last year's trend, it was sometime in August, sometime in September, sometime in October. Even once October it got opens. So we can't say at this moment. So if your visa is going to expire, so in that case, what I would recommend, go for either employer sponsored visa, training visa, look for those visas. If nothing, then student visa would be the last resort. एंड मैम रोनी का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। रोनी पूछ रहे हैं कि आई चेंज्ड माय जॉब इन नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, नॉमिनेशन अप्रूव्ड 4 months back for 491, कैन आई चेंज माय जॉब? Okay, so 491, if you have already applied, which state have you applied for? Tell about the state, Roni, then we can answer. Yeah. And ma'am, Navjot पूछ रहे हैं कि will the stream 1 conditions of New South Wales 491 stay same for the next year? New South Wales is very unpredictable. Every financial year they have different criteria, different conditions for pathway 1. Earlier it used to be 12 months, now it's 6 months. So guys can't say really. Even we are very unsure at this stage when states are doing like this. For us as professionals, we don't have answers for New South Wales whether they will stay same for the next financial year. एंड मैम प्रदीप का भी कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है। प्रदीप एक्चुअली पर पूछ रहे हैं कि लाइट व्हीकल मोटर मैकेनिक है, 70 पॉइंट्स, न्यू साउथ वेल्स 190, क्या चांसेस होंगे उनके? Okay, New South Wales still they have good quota for this financial year. It can come. Last financial year, motor mechanic at 65 points, we got invitation for 190. So it can come. Be hopeful. I would say all the best. And along with that, we do have, ma'am, यहाँ पे next question आ रहा है हमारे पास में. I'm eligible for both. Which one is better, pharmacy technician or industrial pharmacist? Okay, so which one is better? Industrial pharmacist is definitely better than pharmacy technician. But pharmacy technician, it is not there in all the lists. Industrial pharmacist, the chances are better. Associated entity the key meaning hunda ma'am? Associated entity in which context, Amy? Can you just tell me in which context are you asking? Along with that, ma'am, Ramin पूछ रहे हैं कि I have PR and I will my family come here, then have PR in Sweden, not citizen. You are a permanent resident here, and if your family come here, will they be a permanent resident? They are permanent resident in Sweden. Not citizen. Not citizen. See, if you apply for family, I don't understand your question. Like in family, what you're talking about in family, is it member of family unit? Are you talking about your spouse, your kids? Are you talking about your parents? So can you just please be more specific? Ma'am, pharmacy technician is not an SOL list? Pharmacy technician, no, it is like there are two things. Like you are just a moment. Thank you. That's actually needed. So, yep. I got confused with something. So pharmacy technician and what was that another one? Industrial pharmacist. They both are in 190-491 list. Guys, I hope you all understand there are thousands of occupation, right? So it's very difficult sometimes just to remember what is in what list. I'm generally very thorough with most of the occupation, but like sometimes if you randomly ask me, I won't answer you wrong. It's better to check. So pharmacy technician and retail pharmacist, they both are in short-term skill occupation list. So 190-491, yes, for both. But industrial pharmacist has better chances compared to retail pharmacist. Yeah. Ma'am, Ramin was actually asking about the parents, mom and brother, sister. Okay.
brother and sisters, they don't come in family. Parents, they are considered for parents visa. So parents visa, there are different types of parents visa. Depending upon the age of your parents, then we can suggest you. All good. So now Aman is actually asking, can we travel outside Australia on bridging visa? I'm waiting for my TR. So right now you're waiting for your TR, your student visa is already expired or is it active? जी अमन बताइए आपका अभी एक्टिव है या एक्सपायर्ड है? अच्छा मैम, इन द मीनवाइल गीत पूछ रही हैं दोबारा. गीत इज आस्किंग, कैन वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ 186 बिफोर 1 to 2 months when 3 years are completed because 485 is expiring. 186, the 3 years criteria, 3 years full-time criteria is time of application criteria. It means at the time of application, I need to have 3 years full-time experience, unlike 482 visa. If you are talking about 482 visa, in that case, 2 to 3 months before that, you can start the process. But 186, if you want to launch the application, you need to have 3 full years to be eligible. Okay. गुरदीप प्लीज आप अपना क्वेश्चन एक बार रीटाइप कर दो बिकॉज काफी ज्यादा कमेंट्स आने की वजह नाल कई बार क्वेश्चन ऊपर चले जाता है तो आई एम नॉट एबल टू रीड दैट सो इफ यू कैन जस्ट टाइप इट वंस अगेन होपफुली आई विल सी इट सो मैम इन द मीनवाइल गुंजीत इज आस्किंग कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट कोविड वीजा कैन वी चेंज एम्प्लॉयर Yes, I can confirm. You can get it in writing on COVID visa. You can change employer. There was leniency from the department. If you even go to Department of Home Affairs website, in the news section, you will find that on 408 visa, you can change employers. And ma'am, Dipsika का question था कि I am eligible to change my course. I will finish my first semester on May, which will be 4 months. So if your university is giving you release, you can change your course and you can change your course. I understand what your question is. Basically, you're asking about just because sometimes the semester, it completes in 4 months. So in that case, you can change your course if your university allows and another university where you are going. So remember to maintain the AQF level. If you are on the same student visa, not changing the student visa, just remember to maintain the AQF level. Gurdeep, you are asking what is deemed date? किस चीज की deemed date के बारे में आप बात कर रहे हो? आप प्लीज थोड़ा सा बता दो. Okay. So, ma'am, we have more questions coming up. Mohammad Arslan पूछ रहे हैं कि I have completed 5 months field job in accounting. Can I now apply for pathway 1 or should I wait? You should wait, Mohammed. 6 months, like 6 full months are required for pathway 1 in New South Wales. So don't apply with just 5 months. So मैम गुरदीप का डीम डेट से मतलब था कि 186 का वर्क एक्सपीरियंस काउंट आफ्टर सर्ट 3 होता है या डीम्ड डेट? It's always after the minimum qualification on ANSCO, right? So imagine if you're talking about carpenter, it's cert 3. If you're talking about chef, it's going to be diploma for your 186. The ANSCO. Always remember the ANSCO code. Yep. And मैम प्रशांत एक क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं अपना, वो पूछ रहे हैं कि I got 70 points ECT chances. When can we expect 189 invitation round? Sorry, ECT, how many points? 70 points. 70 point ECT. ECT, very soon the next invitation round would be for 189, as I mentioned. So it's been already 5 months for the last ECT round. So it should be very soon. Yes, so प्रशांत ने काफी बार ये क्वेश्चन पूछा था अभी कंटिन्यूटी में. आई होप प्रशांत को उनका आंसर मिल गया. एंड along with that we'll just go a little back. मैम गुरी पूछ रहे हैं कि can we apply 186 in a day? I meant to say TR will end on 10th April and 3 years will complete on 9th of April. Yes, you can apply. You should be all ready. Let's say your agent is all ready with all the documents. Yes, you can apply. Before that, nomination needs to be applied. Only thing, the visa application that can be left for the last day. And ma'am, COVID-19 पे full time work while on student visa for 186 experience. Okay. So for 186 experience, I understand your question because on student visa, you guys were allowed to have full work rights
that experience will be countable. Definitely it will be countable. If there is any problem, always there are policies and there are legislative instruments to back that up. So it is definitely countable. मैम जेसन पूछ रहे हैं सिडनी में ऑफिस कब ओपन होगा? Okay, very soon we are opening in Melbourne. This month, last week of this month, we are opening in Melbourne, and next destination is definitely Sydney. So see you in Sydney soon. मैम बैचलर्स ऑफ आईटी के बाद पीवाई का कोई बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी स्किल्स असेसमेंट हो जाएगी आफ्टर बैचलर्स ऑफ आईटी. इफ यू डू पीवाई skills assessment, plus you will get 5 points, but at this moment I can't comment more on that. Skills assessment for sure, 5 points. It depends, as the department is going to revise the point system, so it may go as well. And ma'am, next want to know कि best state कौन सी है होटल मैनेजर के लिए? 90 points है उनके पास में और वो क्वींसलैंड के लिए वेट करते रहे. Okay, at this moment I can't say which state is best, because all the states were more or less same. This financial year, current financial year, all the states were more or less same. The best state otherwise, if we talk about hotel motel manager, I would say South Australia. Try South Australia. Yeah. And ma'am, राजेंद्र पूछ रहे हैं कि वो बेकर के क्या चांसेस है? 65 points for 491 New South Wales. That is same for any other occupation. As I mentioned, pathway 1, definitely good chances are there. For other pathways in New South Wales, very random invitation rounds are there, and they never reveal the data. That is why it's very difficult to say anything about New South Wales. They have given out invitations recently for many trade occupation. Bakers, we haven't got any invitation, and not that we are aware of. एंड मैम अलॉन्ग विद दैट निशु पूछ रहे हैं कि सर्ट 4 कुकरी में उन्होंने किया, कर रहे हैं वो एक्चुअली अभी, और लेकिन उनकी एज 35 से ऊपर है. प्लीज हेल्प एंड गाइड. Okay. So if you are on a student visa and thinking to apply 485, but age is crossing 35, guys, as you know, from 1st of July, the rules are getting changed. So if before 1st of July, anyways, if you can complete 92 weeks, lodge your 485. Otherwise, you have to go for either employer-sponsored visa or training visa, because you have already completed 2 years of study. You can go for training visa. 482 visa you can go for. If there is nothing, the last resort would be student visa, but try to have the progression in your study. Advanced diploma you have already studied, go for maybe bachelor's of hospitality management. Okay, or South Australia. And hi, may I know if I'm eligible for IELTS exemption for ECT? IELTS exemption for ECT is only you are eligible if you have 4 years of Australian study. So 4 years of Australian study, if you have, definitely you are exempt for IELTS academic. Yes, and ma'am, could you tell me, I got my ROS subclass 851. Oh, I just missed up on how many does it take to bring my family? Okay, so the moment you have your ROS, so you can apply for a partner visa. You can apply for partner visa, but partner visa depends upon which state. I assume you are from Afghanistan. Looking at ROS, I'm not sure. So not sure from which nationality you are, but partner visa depends upon the nationality. It can take very long period of time. I know the clients, those who are even where they are even taking about 5 to 6 years, whereas from some nationalities, the partner visa, it's taking very less time, within 4 to 5 months. And ma'am, civil technologist kaisa occupation hai? Kaisa occupation means like in terms of what? Civil technologist. Which civil technologist? Civil technologist जैसा occupation. As such civil technologist करके कोई occupation नहीं है हमारी list में. आप थोड़ा specify करेंगे? मैम मास्टर्स ऑफ टीचिंग अर्ली चाइल्डहुड के पीआर के क्या चांसेस होते हैं? Masters of teaching early childhood, yes, chances for PR. So early childhood teacher, chances of PR are very good chances. It is there in 189, 190, 491, all the list. And for 189, the invitation rounds, if you check, lots of invitation.
Someone is 35 years old and she's asking, will I get TR? How long is the training visa? Training visa is for 1 year, and the processing time for training visa is pretty long if you are not in health sector. Processing time for training visa is about 6 to 7 months right now. And ma'am, Jobanjeet का question आ रहा है कि what's the best way to bring my parents permanently here if you are only child? Does make that? Okay, so the best way to get your parents here, if you are the only child, it means you are meeting the family balance test. If your parents are not aged, age means pensionable age. In that case, you can apply for contributory parents visa. The processing time has increased. It used to be 3 to 4 years, but it's now 12 years. It is a permanent resident visa, but they won't get any bridging, any Medicare during the processing, they won't get it. Other than that, if they are already aged, you can consider non-contributory visa where they get a bridging visa. They can also get a Medicare. So guys, along with this, I hope we have answered most of the questions and हम try करेंगे कि हम schedule time के ऊपर दोबारा live आते रहें ताकि ज़्यादातर जो हमारे clients हैं उनको अपने questions का answer मिलता रहे. हमारे migration agent Miss Neet Dhillon, so she was all there to answer most of your queries. Guys, अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं या मेरे क्वेश्चन का भी जवाब और चाहिए था, जनरल कंसल्टेशन बुक करो, हम उसके अंदर आपकी प्रोफाइल असेस करेंगे. अगर जनरल काउंसलर आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज इफ इट्स अ माइग्रेशन क्वेरी देन नीट हिलन इज ऑलवेज देयर फॉर अस टू आंसर मोस्ट ऑफ आवर क्वेरीज. So guys, stay tuned, stay connected, wait for more videos, for more information. Be with Visa Empire. And we'll be there live next Friday again. And not next Friday, guys. So we are doing every fortnightly. So the following Friday, we'll be here again 4 to 5 p.m. If you will have any questions, meanwhile, you can go to our website, submit your query, or the best way is, as Manvi mentioned, you can just go for general consultations, which are free of cost for just like 1 or 2 questions. If you have, it's free of cost, so you can do it. Always you can contact us through Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. So these are the channels there where you can follow us for all the updates related to immigration. Okay, guys, thank you so much for being with us. Thank you so much, Neet ma'am, for answering most of our questions. See you next time. Bye bye. Thank you, everyone. We have to just